So yesterday we created one of the custom object like hiring managers, and we have seen that there are two different ways to create an object. First is by using the standard navigation. The second one is by using the schema builder. So we are about to create three different custom objects. I already told you that we are going to follow this document, and there are so many different names for this document. Sometimes it is called as IDD, the interface detail document. Sometimes it is called as the requirement. Sometimes it is called as user story, and there are different names for that. So what I'm doing right now is just I'm actually making you aware about few of the terminologies that we use inside the IT. So we already have created this hiring manager object yesterday, and then let's now create another object. The object is candidate. One more thing, what I would like to tell you here is that I told you one thing, that whenever an object is created, like we created this object. So for the object part, we have discussed with this diagram that whenever we create any object, see how much development and how much part that we are going to involve is that we only expected to work on this side. That means the object side. Then during our discussion, I already told you that, whenever we create any object, for that object, the database table, that means the backend part is already being created by the Salesforce only. Moreover, the business logic class, which is actually required to connect the front end with the back end, this class is already being written in the backend. Something called as metadata. You are going to see what does it means by a metadata. Metadata is something called as data about data. So gradually, I'm going to increase the terminologies and make you aware of new and the new things. But right now, the yesterday's discussion was like this कि मैंने आपको बताया कि because we created an object, that means we created the front end. Now for that front end, one table has already been created. Then we have discussed this. क्या वो table blank रहेगा? Does the object have any fields? Because we haven't created any fields. So because we haven't created any field so far in the object, custom field आप देख सकते हैं inside this custom object hiring manager what we created yesterday. There is no custom field. There is no custom field. Although, but yeah, there are a few of the standard fields that I could see. So we also have a discussion on that, and I told you to please write it down that whenever an object is created, there are 5 fields that are automatically created inside the object. So the object is never blank. Rather, the object have 5 different standard fields. Whenever an object is created, it consists of 5 different standard fields. What are those? First is ID. The second, you could call it name, and the third is owner, and the created by, and the last modified. So these are actually, these are actually 5 different standard fields. And whenever we create any object, these 5 fields are automatically created inside the object, right? So we should be aware of this thing. We should be aware of this thing that whenever I'm going to create any object, these 5 fields are going to be get created. What are those? ID created by name, last modified by owner. So just just read it out once and just make it aware yourself. चलो बाकी का चीज बाद में आएगा. Let's now create another object. One more object is we are expecting to create one more object, and that is candidate. Yesterday I told you that we are going to create 3 different objects. इसमें से hiring manager और candidate. These 2 objects I will be creating it with the standard navigation. तीसरा जो object हमें बनाना है position. For the position object I will follow the schema builder. Okay. So these are the 2 different techniques by which we could create the object. तो एक बार और हम कैंडिडेट जैसे yesterday we have seen it with the standard navigation. आज फिर से हम एक और रिवाइज करते हैं. Let's create another object candidate यहाँ पे with the standard navigation only. And मैं यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाला है ना. I'm actually twisting something, difficulties लाने वाला. So let's do that. How to do that? Okay, fine. So let's go to the setup menu and then build menu. Inside the build menu, we just need to expand the create menu and click on the objects. This was the navigation where I told you. So you see, yesterday we created an object hiring manager. Let's now create another object. So click on this particular new custom object button, and it will ask you to enter the labels. Here is the label candidate, and the plural form of this is candidates. That is the form is actually being going to display on the tab. So this is something we are going to display on the tab. Now you could give any description if you want. Just give you any description.
Yesterday we have a discussion on this, and I told you that right now we are just supposed to click all this. सबके सबको click करो, and we are going to use that. अभी इसमें क्या click किया नहीं किया तो क्या होता है? That is something we are going to learn आगे चल के, है ना? Deployment और in deployed का status क्या होता है? That already I have told you. In development और deployed का status क्या होता है? Allow the search on this object, add the nodes, ठीक है? But see, intentionally, I'm actually not clicking this. I'm not clicking this. Launch a new custom tab wizard after this custom object. Okay, after saving this custom object. So I'm intentionally not clicking this. So let's see what happens. So let's save this. So my first question is whether object is created or not. The answer is yes. The object is created. Why? Because see, the object is created. That is why I could see the object. Custom object candidate is being created. Next, object is created. Okay, object is created with all those ID, name, owner created by last modified. Object is created. That is not the issue. But whether the tab is created or not, see, the tab is not over here. So if you forgot to click that checkbox, that checkbox, launch a new custom tab wizard after saving this custom object. What really going to happen is that, although the tab object is going to be created, tab will not there. Tab will not there. Let's see whether the object is created or not. So let's go to the setup menu, build menu, and then create and click on the object. See here, the name of candidate is already there. That means we have an object. But do we have a tab for this? Let's go and verify. Let's go and verify because we haven't seen the tab over here. कल क्या हुआ था कि we follow the every step. तो hiring manager tab अपने आप यहाँ पर आ गया था. Let me go with the list of C. The first is campaign and the card and the chatter communications. ठीक है. तो हमारा is candidate CA के list में आना चाहिए. CAN आना चाहिए. तो CAM आ गया. That means M के बाद N आता है. तो after campaign and card के पहले तब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट लिस्ट आउट होना चाहिए था. बट यहाँ लिस्ट आउट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट. वी हैवंट एनीथिंग कॉल्ड एज कैंडिडेट. देखो आप यहाँ कहीं पर भी सी की लिस्ट में है ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कैंडिडेट. व्हाई? बिकॉज द टैब इज नॉट क्रिएटेड. टैब इज नॉट क्रिएटेड. So this happens, when you actually, maybe intentionally or accidentally, if you forgot to click that checkbox. क्या था वो checkbox? Launch a new custom tab wizard. अगर आप उसको click नहीं करते हो ना, object तो create हो जाता है. There's no doubt in that. Object is going to be get created. Let's see once again whether we have this object or not. Yes, we do have that object. If you go to this navigation, you see the object is there. Problem is what? Tab is not there. Now, I'm unmuting you guys. I'm giving you command. You can unmute yourself. Now you tell me one thing. I'm asking you one question. Give me the answer. If there is no tab, probably if there is no tab, how could I access the object over here? If there is no tab over here, how could I access the object? Yeah. If there is no tab. Sir, by using developer console? That is a different story. In the admin module, yes, I could access it from the developer console, but you should be a developer for that. If you are an admin, how could you access the object over there? See, if you are a developer, you know how to use the developer console. But for the admin part, let's talk about the configuration part. So within the configuration, whatever the knowledge the administrator have, can we use this object? Is there any way to use the object? Can I store this? Like, yesterday I show you that. You click the new button, you probably could store something like, the hiring manager. Save it. One record has been stored. If I now go to the hiring manager, I could see that one record is there, Kashish Chaudhary. Why it is possible? Because I'm having this interface, the user interface to store the record, right? The same thing I wanted for the candidate object. Because I have created an object candidate. See, the object is here. The object is here. How could I use that? If I click from here, we don't have anything to store this. This interface looks different and this interface looks different, obviously. From here, you cannot store the data inside the object. Yeah. Sir, by using the ID
which are at the last at 12 digit or 15 digit ID, which are being unique ID for every object. Every object has 3-digit ID. Last three digit of ID. Fine. This is the A00 is the ID of the hiring manager. Okay, fine. Now I'm on to the candidate object. You just see the URL. See the URL. Where is that ID? The 3-digit ID. जैसे यहाँ पे अलग से highlight हो रहा है. See, यहाँ पे बहुत clear cut highlight हो रहा है. A00/ salesforce.com/A00/ मतलब A00 is the ID of hiring manager. यहाँ पे थोड़ी nice हो. सीधा साधा मतलब बताऊं फिर. We cannot access. We cannot, as an administrator, we cannot access any object if we don't have a tab for this. On the developer console पे आप जाओगे तो you have definitely this provision. You could access it from here. आप access कर सकते हो by making the SQL queries. आप उस पे SQL query fire करो, you could definitely access that. See, objects में जाता हूँ. Here the object is going to be get listed out. Here the object हमारा. These are the fields right now inside the object. And I could make a query, with the use of a query, I could access the object. So developer सब कुछ कर सकता है. Developer doesn't at all requires a tab for the object. So, tab नहीं चाहिए. But when we are working on the admin side, when we are on the configuration side, if we have an object but we don't have a tab for this, we cannot use that. That is why tab is important. That is the reason why the tab is important. And we have also read this. I mean, yesterday or day before that. हमने जब tab पढ़ा था, तो I told you that tab is what? Tab is a collection of user interface through which we can manage the records inside the object. So if there is no tab, we cannot access the object. That is why, let's अगर अभी कभी ऐसा scenario आपके सामने बनता है that you could see that there is an object is there, but there is no tab. So how to create the tab for that? So how to create a tab? Okay, that is what we are learning right. So I already have written the navigation. Don't worry. The entire steps of creating the tab I already have written. So first of all, let me tell you how many different types of tab are there. So altogether, there are 5 different tabs in the Salesforce. This is also one of the interview question. Always remember. Custom object tab. जो हमने अभी object बनाया है candidate, उसके लिए tab create कर रहे हैं. This type of tab is called as custom object tab. Then visual force page tab. ये आगे में बनाओगे आप. Web page tab. जब आप community बनाओगे तब. And the lightning page and the lightning community. This is not a part of your training, but हाँ, अगर आप lightning पे जाते हो आगे चल के, you will understand what does it means by component, and what you will understand what does it means by a lightning page. There are 5 different tabs. There are 5 different categories of tabs: custom object tab, visual force page tab, web page tab, lightning page tab, and the lightning component tab. Okay, these are the 5 different types of tabs in the Salesforce, and this is the navigation to create the tab. Whenever tab is not created, let's follow the same navigation. So let's go to the setup menu and then go to the build menu. Inside the build, just expand the create. Every time you create apps pe ho, objects pe ho. Now click on the tab. See, there is one link called as tab. So we are on to the custom tab. How many different types of tab are there? Custom object tab, web page tab, visual force page tab, lightning component tab, lightning page tab. So on this particular interface, all of the different types of tab that you have created are going to be listed out. और ये है 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 different types of tabs in the Salesforce. And this is also one of the interviews. How many different types of tabs are there? Custom object tab, web page tab, visual force page tab, lightning page tab, and the lightning component tab. Okay. So अभी तो हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, of course. So we are working only on the custom object tab. Custom object maybe we already have created one of the object hiring manager, and yesterday we actually have created tab for this, right? There's one more object, there's one more custom object that is candidate. For this object there is no tab. This is the object what we have created right now, and for the candidate object there is no tab. So how to create a new custom object tab? There's a new button over. Just click on the new tab. तो यहाँ पे आप इस इंटरफेस पे है ना, here when you just
ये क्विक लिस्ट मेनू पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्ट्स लिस्ट आउट हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट लिस्ट आउट हो जाएंगे जिसके लिए फॉर द ऑब्जेक्ट देयर इज नो टैब। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके टैब नहीं है, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड आउट। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अभी तो कैंडिडेट ही बनाया आपने। अगर इफ आई क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, नो, इफ आई क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज बुक, ठीक है, and the plural label is books. Okay, let me allow the report, allow activities, track everything, make it deployed, allow the search, add notes, but don't click this. Okay, tab is not. So what will happen? The object will be created. See, the object is created, the tab is created. No, let me once again go back to this. Let me rather refresh this. Now there are two names, see, book and the candidate. I mean, these are the objects, but tab is not there. Let me create one more object. If I create one more object, if I create an object called as author, if I create an object called as author, the plural label is author, and then allow search, add notes, optional feature, make every optional feature, and then save it. Again, I haven't clicked this. So see, the object is created, tab not. Now if I refresh, these three are the objects. So it means यहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्ट लिस्ट आउट होते हैं आपके जिसकी देखिए ऑब्जेक्ट बन चुके हैं लेकिन जिनके टैब नहीं बने। So इसमें से किसका टैब बनाना है? I wanted to create a tab for this object candidate. So out of this list, let me just select the candidate. अब उसका टैब स्टाइल देखो आप, ठीक है, टैब स्टाइल देखो कि आपको आइकन प्लस कलर कौन सा चाहिए। सैंपल for the candidate, let me select a suitable icon for this candidate, ठीक है। Okay, next, make it visible for every profile user and click the next. Make it include everywhere and click the next and save. Okay, so now see, we have created a candidate also. Candidate आ गया, अब ये user interface आया। Now the object ID जिसको आप बोल रहे थे, object ID is now created A01, ठीक है, object ID is now created A01, इसके पहले नहीं था ये, right? So now you could enter a new data, and the candidate is Suresh Tripathi. Let me see this. So now this object have one record, Suresh Tripathi. If I go to the candidate object and if I press this all button, so now we could see that we have a record Suresh Tripathi. So this is the way, this is the way to create the objects and the tab. So by the way, if you forgot to create the object or accidentally by some means, if the tab is not created, if the tab is not created, this is the way to create the tab. What is that? Let's once again revise. Go to this setup and the build and the create, click on the tabs. Here it will display, how many objects for which the tab is being created. If you click the new button, you will get the list of all those objects for which there is no tab. Let me select the author because I created an object author, but for the object author, there is no tab. Let's create, one tab for this also. So for the author, let like this, I select this icon and select this next, click the next, make it include for every profile user and save. So now we have one more tab called as author, see, and we have this interface, I could write down the names. Okay, let me revise the same process for the book also, because there is one more object book we have created. For the book object also, there is no tab. ये हो गया author, candidate, hiring manager हो गया. There's one more object we have created called as book. So book object के लिए भी tab नहीं है. So let's select the tabs for that. Book का कुछ रहता है यहाँ पे. Yeah, books. And click the next button. Click the next button. Make it visible for every profile user and save it. So guys, this is the way. Now I have all these objects. I even have the tab. So whenever the object is there, tab is not there. This is the navigation to create the tab for any of the object. Because if you don't have a tab, you cannot access that object at the admin level, at least at the admin level. If you are a developer, you could definitely access that. You developer don't require a tab to access. We actually developer doesn't work in the user interface area. यहाँ पे काम ही नहीं करते हैं. We always work on the development side. तो यहाँ पे अगर आप if you are onto the user interface level, you are onto the front end part.
then you require, you require a tab to access any of the object. If there is no tab, you cannot access the object, right? That is why the tabs are important. That is why the tabs are important. And you could see the numbering of this, you could see the numberings over A00, A01, A03, A02, like this. These are actually being numbered. These are the object ID numbers. ये इनको allot हुआ है. Salesforce ने allot किया actually, right? This is the way to create the object and to create the tabs by using the standard navigation. ये आपको मैंने बता दिया. So in our list we have one more object, and that object is actually position object. Okay, we have an object called as position object. Let's create this object using the second technique, and that technique is schema builder. Using the schema builder also we could create the objects. ऐसे काम करते उसको थोड़ा सा पेंडिंग रखता हूँ मैं इसको. Let's first now understand about the fields. Fields create करते हैं, उसके बाद में हम we will create the position object along with all these fields. Position object भी create करेंगे, उसमें fields भी create करेंगे, ठीक है, एक ही बार में. चलो अभी उसको थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं. Let me create all these fields inside the object. The hiring manager object में I should create all these fields. Inside the candidate object we should create all these fields. ये 12-13 fields जो भी है. So let's first understand, अगर आप fields creation की तरफ बढ़ रहे हो, after this, let's understand what does a fields means. How many different types of fields are there? What is the governor limit associated to the fields? First of all, how to see the fields, and then how to create the fields. Okay, so fields क्या होती है? Fields, first of all, there are two different types. Fields are the columns inside a database. Like whatever is the field, you know this. You now know this. Okay, for every object there is a database table. और जो ऑब्जेक्ट का नाम है वही आपके डेटाबेस टेबल का नाम है. फॉर एग्जांपल, इफ द ऑब्जेक्ट नेम इज हायरिंग मैनेजर, तो हायरिंग मैनेजर विल बी द नेम ऑफ योर डेटाबेस टेबल. इफ द ऑब्जेक्ट नेम इज पोजीशन, तो टेबल का नाम भी पोजीशन ही रहेगा. एंड द फील्ड्स दैट आर फील्ड एज अ नेम फील्ड अभी हमको दिख रहा है, उसमें नेम, आईडी, ओनर, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, तो उसमें एटलीस्ट 5 कॉलम्स तो हैं. So these fields, whatever you field you created, whatever the fields are there inside the front end object, वो सारे, these are the columns. These are the columns inside a database table. ठीक है, ठीक है. तो हमने क्या इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Fields are what? Fields are actually the columns. Fields are column inside a database table. चलो, first of all, now there are two different types of field, standard and the custom field. Every time, see, every time whenever we learn a new concept, जैसे हमने apps पढ़ा, application, so I told you there are two types of applications. What are those? Standard and the custom application. जैसे आपका sales service and the marketing comes into the standard part. फिर आपने you understand, I mean, you learn how to create your own application, Skyline, Market Corporation, वगैरह वगैरह, ठीक है. Then we started with the objects. I told you that there are two types of objects are there, standard and the custom. Standard object जैसे कि आपके account, cases, contact, custom object ये जो अभी आपने create करे, hiring manager, candidate, author and post, these are the custom objects. Then अभी हम field creation की तरफ बढ़ रहे हैं ना. We are about to create the fields, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि the objects what we have created, it only have one field, name. Name के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, right? But we certainly want to enter few more records, कुछ और चीजें हमको. To store the details of hiring manager, we certainly want, few more fields are required, like the hiring manager email ID चाहिए. We wanted to store the hiring managers like phone number and the location, things like that. Even for storing the details of the candidate, apart from the name, we certainly required to have few more fields over here. तो वो कैसे होगा? तो we should create the fields, है ना. हम creation करना पड़ेगा. We should create the fields inside this object. So that is what we are going towards, right? तो fields के भी दो type होते हैं, standard and the custom. Standard वही है जो अभी आपको बताया मैंने, ID, name, owner, created by, last modified by. So these are the ready-made fields that are there into the object. जो object आपने create किया है, जो पहले से created है ना. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आईडी नेम इसी में है, ऐसा नहीं है. अकाउंट, केसेस, कॉन्टैक्ट, लीड सभी में है. फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इट हैव दीस स्टैंडर्ड फील्ड्स आर देयर, आईडी, नेम, ओनर एंड देन क्रिएटेड बाय एंड द लास्ट मॉडिफाइड बाय. उसके अलावा व्हाटएवर द फील्ड्स यू आर गोइंग टू क्रिएट, दिस आर कॉल्ड एज कस्टम फील्ड्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन, इज देयर एनी गवर्नर लिमिट? या, फॉर द फ्री डेवलपर एडिशन we could create maximum 500 custom fields inside an object. I mean, in the single object, I could maximum create 500, not more than that. In the unlimited edition, inside a single object, inside a single object, I could maximum create 100 custom fields, not more than that. So this is the governor limit.
ठीक है, तो काफी क्लोज है, ज्यादा कुछ है नहीं, 500 800 के बीच 300 का ही फर्क है। तो समवेयर द गवर्नर लिमिट्स आर वेरी क्लोज एक्चुअली। फ्री डेवलपर एडिशन भी काफी हद तक इट्स प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी, एटलीस्ट द फंक्शनैलिटीज आर सेम विद द अनलिमिटेड एडिशन। Only the few things, the bandwidth is reduced. Otherwise, you have every facility in the free developer account also. Okay. Apart from the few things. So this is the governor limit. Let me show you कि what are the different steps to view the fields. कि fields को देखने के अलग अलग कौन से तरीके हैं. By using the standard navigation, by using the force.com quick access menu, by using the developer console, by using the schema builder, by using the data loader, by using the third party tools like your workbench and everything. So there are 5 to 6 different ways कि मैं जिससे कि fields देख सकता हूँ. एक बार आपको दिखा देता हूँ finally, फिर मैं data types की तरफ आऊंगा and फिर आज हम एक दो fields तो भी create कर लेंगे. So by using the standard navigation, okay. So if I wanted to see the fields inside the any object, if I wanted to see the fields of any object, so यहाँ पे अभी जो standard navigation अभी जो मैं बता रहा हूँ, it will going to work only for the standard objects. Custom object के लिए नहीं है ये, ठीक है? So go to the setup menu, go to the build menu, just expand the customize. This is the list of standard objects. यहाँ पर अगर for example you wanted to see the fields of probably opportunities, if you wanted to see the fields of the accounts या opportunity, कोई भी तो accounts है, contacts है, opportunities है, leads है, campaign है. Let me just expand the account जैसे expand करता हूँ यहाँ पे fields नाम के एक भी आता है. It will going to listed out this all fields, ये सारी fields listed out कहाँ की accounts की. So this is the first row. Second is by expanding the force.com quick access menu. So go to the account tab. On the right side, you have this force.com quick access menu. Just expand it. It's by default a dockable component, an expandable collapsible component. And there's a link called as view fields. Now view fields पे click करो, you are going to land it over here. Now see, दोनों जगह इंटरफेस एक ही है ना, आप चाहे यहाँ पर, आप चाहे यहाँ पर, इंटरफेस एक ही. This was the second technique. The third, by using the developer console. By using the developer console, just go to the developer console. You want to see the fields of account, so open, click on the objects, click the account, open the account, and see these are the fields of account. These all are the fields of the account. This is the third technique. The fourth, by using the schema builder. By using the schema builder. So let me show you that also. The fourth is by using the schema builder. So we have this link, schema builder is a direct link. Let me click on the schema builder. We now have this canvas. And apart from the account, let me close cases and contact. Now I only have this account on the canvas. I only have the account on the canvas. See, this is what the account object, and these are the fields. These all are the fields of the account. This is your fourth technique. Fifth, data loader and third party tool workbench. ये मैं आपको workbench तो दिखा चुका हूँ already. I told you. Data loader में बाद में शुरू करूँगा. ठीक है? In the data management part, यहाँ पे training में in this training होगी, the admin training, you are going to learn something called as data management. एक topic रहेगा. Within the data management part, we are going to learn about the data loaders. ठीक है? So these are the different ways to look into the fields inside an object. Or different ways to look into the fields. Okay? आपको जो comfortable लगे उसमें आप. Usually I told you ना हम क्या करते हैं, generally we use this post.com quick access menu. बिकॉज इसमें कैसा है ना, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. जैसे अभी मैं अकाउंट पे हूँ, अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड नेविगेशन पे जाता हूँ ना, इफ आई गो टू सेटअप एंड देन इफ आई एक्सपैंड द कस्टमाइज, और यहाँ से मैं अगर लेता हूँ एग्जांपल लीड्स की फील्ड, तो दिस विल ओनली गोइंग टू लिस्ट इट आउट द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की फील्ड तो दिख जाएंगी. बट अबाउट द कस्टम ऑब्जेक्ट, हायरिंग मैनेजर, कैंडिडेट, ऑथर, बुक्स, इनकी फील्ड देखना है तो कैसा, वो तो यहाँ पे लिस्टेड आउट नहीं होने वाली, बिकॉज हियर ओनली द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट आती है यहाँ पे. तो इनका मैं कैसा देखूं? तो जनरली व्हाट वी डू इज दैट जिसका फील्ड देखना है, आई वांटेड टू सी द फील्ड्स ऑफ हायरिंग मैनेजर, तो मैं हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, force.com को एक्सेस मेन्यू को एक्सपैंड करता हूँ और व्यू फील्ड्स पे क्लिक कर देता हूँ. दैट्स इट. मेरे को सारी स्टैंडर्ड फील्ड्स और सारी कस्टम फील्ड्स, बिकॉज अभी क्रिएट नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन वो यहाँ पे लिस्टेड आउट हो जाती है. जनरली वी यूज दिस. अब वो आपके ऊपर है कि आप एक्चुअली आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल. तो वो सारे तरीके आए ऑलरेडी हैव टू, ये सारे तरीके हैं जिससे आप फील्ड्स देख सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द फील्ड. बिफोर दैट, आप फील्ड क्रिएट करने से पहले डेटा टाइप्स क्या होता है वो देख लेते हैं. सो सी, एवरी फील्ड हैज अ डेटा टाइप.
Every field has a data type. Whenever you create a field, whenever you create a field, field's new. Whenever you create a field, it will ask you to select the type of information. It will ask you to select the data type. What kind of data type आप इस field का चाहते हैं? Auto number formula, roll-up summary, lookup relationship, master detail, external, checkbox, currency, date, time, email, geolocation, number, percentage, phone, field, what text area, long, range, time, URL. These are what? These are the different data types. Altogether, 19 to 20 different data types are there. Theory I already have written. Guys, you need to go with this. What I'm going to do is that मैं इसमें से जो fields हैं मैं उसको object में ले लूँ. But what is the what is the definitions and what is the actual the more about this text field you need to actually go with this description. The whole description is over here, the properties and everything. So I'm just right now मैं सिर्फ नाम पढ़ूंगा and मैं उसको यूज करूंगा. बट मैं थियरी नहीं पढ़ूंगी यार, प्लीज. मैं ऐसे कॉलेज का टीचर नहीं हूँ, आप स्टूडेंट नहीं हो. वी आर ऑन टू अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग. आपको ये थ्योरी एक बार पढ़ना है सभी को. ठीक है, प्रॉपर्टीज जितनी भी आप यहीं से डिस्कस कर लें. So there are a few different data types like text के बाद आता text area long. इसमें क्या फर्क है ये मैं दिखाने वाला हूँ सब. text area rich, what is the difference between rich, long, area and the text, तो ये आप समझ जाओगे, don't worry. ठीक है, तो for the text, for entering the text you have certainly 4 different data types. text के लिए text भी है, text area भी है, text area long and text area rich. कौन सी चीज कहाँ पे यूज करना वो इंटरफेस देखोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाते हो, डोंट वरी. तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर मैं इतने सारों में से क्या यूज करूं, कहाँ यूज करूं. वो आ जाता है, वो अपने आप ही आ जाता है, ये आप खुद ही डेवलप कर लेते हैं. देख लो आप इस चीज को. And then for entering email, you have an email also. For entering the phone, there's a phone data type. For URL, website addresses डालने के लिए URL data type है. Number एक data type है. Percentage एक data type है Salesforce में. Checkbox is also a data type. Pick list is a data type. Pick list, multi-select pick list. ये क्या होता है, कैसा दिखता है, सब देखने वाले. Date time, currency, geolocations, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट. जब आप पासवर्ड एंटर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली मास्क हो जाता है ना. तो उसके लिए टेक्स्ट इंक्रिप्टेड इज अ डेटा टाइप. ऑटो नंबर इज आल्सो अ डेटा टाइप. तो दीज आर ऑल टुगेदर 16 17 18 19 डेटा टाइप्स हैं. एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लो, मैं बस उसको यूज करना सिखाऊंगा. ठीक है. So how many different ways to create the fields inside the object? Again, there are two ways: standard navigation और custom आपका schema build. ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक. स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक. तो आई हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स. मतलब अभी फिलहाल जो काम किया, ऑथर बुक को थोड़ा साइड में रखते हैं. Hiring manager and the candidate, these are the 2 objects that I have created. And we could see that inside the hiring manager we have only one field. Even inside the candidate also we have only one field. If I go to this object, in the candidate also we have only one field. But according to our document, what is being shared to us, I could see that the hiring manager should have all these fields. Even the candidate should have all these fields. Okay, chalo. So let's create the field inside the object. The first field we wanted to create inside the hiring manager contact. So how to do that? What is the navigation to? Let me show you that. On you wanted to work on the hiring manager, so go to the hiring manager object. Go to the hiring manager object. See, it has been written. Don't worry, yeah, it has been written. Everything has been written. Click on the required tab. Expand the force.com quick access menu. Click on the link. Everything has been written. बस ये कि मैं वहां से नहीं पढ़ा रहा आपको, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ. So go to the hiring manager's object. यहाँ पर आपको fields create करना है. Just expand the force.com quick access menu. Here you have view fields. View fields दो चीजें अलग अलग बताऊंगा. Then in front of view fields you have new fields. तो पहले view करते हैं, बाद में new करेंगे तो क्या फायदा मिलता देख लेते हैं. तो पहले चलो view fields. तो we go to view fields. तो हम यहाँ पे इस सेक्शन पे आ जाते हैं. हायरिंग मैनेजर की सारी सेक्शंस हमको लिस्ट आउट हो जाते हैं. इसमें आई कुड सी द स्टैंडर्ड फील्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड फील्ड में कोई न्यू बटन नहीं होता है ना. यू कैन नॉट क्रिएट अ स्टैंडर्ड फील्ड, बट व्हाट यू क्रिएट इज अ कस्टम फील्ड. तो चलो कस्टम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप सेक्शन पे जाइए एंड क्लिक द न्यू बटन. क्लिक द न्यू बटन. नाउ इट विल आस्क यू टू सिलेक्ट द डेटा टाइप. क्या कौन सी फील्ड आपको बनानी है, व्हाट द काइंड ऑफ फील्ड यू वांट. तो मुझे जो फील्ड बनानी है उसका नाम है कॉन्टैक्ट नंबर, जिसका डेटा टाइप क्या है, फोन. डेटा टाइप क्या है, फोन. सो from this list of all data types, let me select the data type as to be the phone. ठीक है, फोन मैंने सिलेक्ट किया एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन.
Now give the label over here. What is the label? The label is contact number. ठीक है. As soon as I press the tab, field name अपने आप create हो जाता है. You wanted to give any description, help text तो दीजिए. Otherwise no. Now whether we wanted this field to become a required field or not. Required क्या होता है? Required concept क्या होता है? Let me show you that. See, if I go to the accounts and if I click this account, here I could see that account name is a mandatory field. जितनी भी mandatory fields होती हैं, जितनी भी mandatory fields होती हैं, उसके आगे में एक ऐसा red color का line होता है, right? If I go to if I go to any other object, like if I go probably cases, if I try to enter a new, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ status, case origin. These two are the required fields. So these kind of fields कि जिसका without selection, without selecting the value of this field, you cannot store the data. आप इस करेंगे तो आपको immediately error आ जाएगा. ठीक है, आपको immediately error आ जाएगा. Phone select किया, ठीक है, तो आपको immediately यहाँ पे error आ जाएगा. So without selecting this, you cannot store the data. This kind of field is called as mandatory fields. And almost in every object, few fields are mandatory. Last name is mandatory over here in the contact. If I go to the leads, I could see that last name, company, and lead status. These few fields are mandatory. Right? Inside the opportunity, if I go probably inside the opportunity, also the few fields are mandatory. Like here, close date is mandatory, stage is mandatory, opportunity name is mandatory, right? So this is something called as required field or the mandatory field. ठीक है. So यहाँ पर आप देख रहे हो कि there is a checkbox. There is a checkbox. Always require a value in this field in order to save a record. And if someone tries to save the record, he should supply the value of the contact number. Do you want to make this field as a required field? So first of all, let's see about the IDD. IDD may whether the field is mandatory or not. Yes, it's a mandatory field. It's a mandatory field because it has mentioned over there to create a field called as contact number, and the data type of that field is phone, and the field should be a mandatory field. Field should be a mandatory. I mean, it's a required field. So if at all I wanted to make a field, if at all I wanted to make this field as a mandatory, I should click this checkbox required checkbox. Okay, I should click the checkbox required. Now, one interview question. What are the different ways to make our field mandatory or required? What are the different ways to make a field as to be the mandatory or required? Okay, please write down the answer. Actually, there are four different ways. There are four different ways to make a field a required or a mandatory. Please write it down. I'm telling you the answer. So there are four different ways a field could be made as a mandatory field. There are four different ways I could make a field as a mandatory field. So point number one is while creating, while creating the field, we have a checkbox called as required. During the creation of the field, while creating the field, whatever the sentence you want to form, there's a checkbox called as required checkbox. If you click this, if you check it, if you click this, if you make it active, the fields become mandatory. The fields what we are creating becomes a required, becomes a mandatory field. So at the time of creation of the field, there is a checkbox called as required, and if you click, if you checked it, so the field becomes, if you select it, the fields become a mandatory field. This is the first way make a field a required. बाकी के तीन तरीके धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है. Just have this answer. ये आंसर अपने पास रखो. एक तरीका आज बता दिया हूँ, दूसरा कल बताऊंगा, तीसरा परसों इस तरह से बताऊंगा. But there are four different ways a field can be made as a required field. First is what? There is a checkbox called as required. You select the checkbox, the field becomes mandatory. Click the next button. Make it visible for every profile user. Mandatory fields हमेशा अपने आप ही हो जाती हैं, and then save it. Okay. So now let's go to the hiring manager. Let's go to the hiring manager. I could see that if I press the new button, see one more field is added. Name was already there. Contact number is now added, right? Contact number is now added. Let's create one more field. So go to the hiring manager once again. Expand this. Post.com quick access menu. इसके पहले आप view fields पर आए थे. है ना, आपने view fields पर click किया. And from the view fields, go to the custom fields and relationship section. See one field has been added. Click the new button, and you will be going to land it on this state. यहाँ पर land करो. Now I'm telling you the direct way to do that. ठीक है.
On the tab, Force Hiring Manager, just expand the force.com quick access menu. See, in front of you field, there is a link to create the new field. Just in front of the new field, just click on new field. आपकी एक step बच जाती है. You will be directly landed over here. Data type select करने का, ठीक है? So let's select the data type. Data type. Let's go to the ID. Second field, what I wanted to create is the name is HR email ID. What is the type? Type is email. It is mandatory? No, it is not mandatory. Okay. So select the data type. Yes, to be the email. Email. Let's click the next button. Give the label as to be the email ID and click the tab button. Tab करोगे तो ये अपने आप API name अपने आप create होता है. Whether you wanted to make it required? No. You wanted to make it unique? No. Unique क्या होता है बताऊंगा मैं आगे चल के. External ID? No. Because it has not mentioned है ना. IDD में mention नहीं है. Mention नहीं है तो मैं अपने मन से कुछ नहीं करूँ. ठीक है. I just required to follow this document very strictly. ठीक है. जो document में mention है वही काम करना है. Okay. Now click the next button. Make it visible. And make it visible for every profile user. Click the next button and save it. Okay, and save. So right now I could see that there are two fields. ये दो fields. Let me refresh and see what happens. One more field, HR email ID is added. It's not a mandatory, right? One more field is added. So and one of the fields provided. अब क्या बचा है? HR ID बचा है. HR ID and location. Okay, let's do that also. So go to this custom fields and relationship section. New button पे press करो. अब आपको एक नया field बनाना है HR ID के नाम से. ठीक है, HR ID and auto number field. So let me select the auto number from here. Auto number. Click the next button. If the name has to be the HR ID. ठीक है. ऑटो नंबर कैसे देते हैं? डिस्प्ले फॉर्मेट, मतलब कि किस तरह से वो डिस्प्ले होना चाहिए. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर दैट. देयर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक हायरिंग मैनेजर 000. ठीक है. स्टार्टिंग नंबर देता हूँ मैं 001 से, मतलब जो पहला रिकॉर्ड है, द वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड इनसाइड द हायरिंग मैनेजर. इफ आई गो टू द हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट, दिस इज माय रिकॉर्ड. सी, दिस इज माय रिकॉर्ड. इफ आई ओपन दिस रिकॉर्ड, कशिश चौधरी, तो इसको एक नंबर रहना चाहिए. ठीक है. अभी फिलहाल यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, HR ईमेल ID फील्ड है. HR ID में अभी क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है. तो HR ID क्रिएट कर, तो पहला नंबर क्या है? 0001 इसको अलॉट होना चाहिए. और उसके बाद जितना भी रिकॉर्ड स्टोर करूँ, 0001, 0002, 003. तो आई एम जस्ट गिविंग अ नंबर फॉर एवरीबॉडी. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. तो ये ऑटो नंबर फील्ड क्या होता है कि जब भी कोई नया वैल्यू स्टोर होता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली ये वैल्यू अलॉट कर देता है, एक से इंक्रीमेंट करके. तो उसका ये कैसे डिस्प्ले होना चाहिए? HM-000 इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए. और स्टार्टिंग नंबर कहाँ से आना चाहिए? 001. आप 002 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, जहां से भी. या आप 1000 ले सकते हो, 1000, 1001, 1002. तो आपको जहां से भी स्टार्ट करना है. और जब भी एक नया वैल्यू एंटर होगा, उसको ऑटोमेटिकली ये नंबर मिल जाता है. ऑटो नंबर इसलिए बोलते हैं इसको. ठीक है. एक से इंक्रीमेंट हो गया हमेशा. ठीक है. दिस इज द डिस्प्ले फॉर्मेट. क्लिक द नेक्स्ट बटन. Make it visible for all profile users and select the next button. Save it. तो आपका एक और फील्ड ऐड हो चुका है. ऑटो नंबर हमेशा डिटेल लेआउट, ये डिटेल पेज है देखो, और ये एडिट पेज है. एडिट पेज पे ऑटो नंबर नहीं दिखता है. क्या होता है मैं बताऊंगा आगे चल के. इफ आई रिफ्रेश दिस, यहाँ पे कहीं पर भी आपको ऑटो फील्ड नहीं नजर आएगा. ऑटो नंबर फील्ड्स आर नेवर विजिबल ऑन द एडिट लेआउट. एडिट लेआउट पे नहीं दिखता है, आपको डिटेल लेआउट पे दिखता है. डिटेल पे कैसे दिखेगा? एक मिनट, मैंने जस्ट सेकेंड, मैंने एक चीज देखने दो. सेटिंग थी, मैंने शायद भूल गया उस सेटिंग को.
फिर से इसको बनाता हूँ, because I actually have forgot one setting over. Since एक सेटिंग थी जो मैं भूल गया हूँ, सो इसको फिर से बनाता हूँ। HRID I deleted this field, ठीक है, deleted, इसमें जाके पेस्ट करना, so just permanently deleted, ठीक है। सो एक ये जो फील्ड है इसको फिर से क्रिएट करता हूँ मैं, लेट्स वंस अगेन लेट क्रिएट द फील्ड, सो सेम थिंग, hiring managers, let's expand this, new, select the field as to be the auto number, click the next button, and then field name is HRID, display format is this, the first number is 001। यहाँ पर देखो एक ये छोटा सा चेक बॉक्स है, ये मैं क्लिक करना भूल गया, जनरेट द ऑटो नंबर फॉर द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इफ द ऑब्जेक्ट हैव सम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे कशिश चौधरी और ऐसे 3-4 रिकॉर्ड है, व्हाट यू वांट, वेदर यू वांटेड दिस कि वो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको भी नंबर मिलना चाहिए या नहीं। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो इसको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, अदरवाइज उसको नंबर नहीं मिलेगा। फिर नया जो रिकॉर्ड स्टोर करोगे वहां से नंबर अलॉट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कशिश को नंबर नहीं मिलेगा, इसके बाद में फिर जो भी नंबर रिकॉर्ड स्टोर करता हूँ उसको पहला नंबर मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो भी सीरियलाइज हो जाए। तो ये एक चेकबॉक्स था जो मैं भूल गया था। नाउ क्लिक द नेक्स्ट बटन, make it visible for every profile user and click the next button and save it. Generating the auto number for the existing record make few minutes, ठीक है, तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हमारे केस में तुरंत ही हो जाएगा बिकॉज वी ओनली हैव वन रिकॉर्ड। तो एक और फील्ड अपनी बनके तैयार हो गई है, HRID नाम की फील्ड। डेटा टाइप क्या है इसका, ऑटो नंबर। नाउ इफ यू ट्राई टू सी दिस फील्ड ओवर हियर एडिट पे, एडिट लेआउट पे, तो आपको नहीं मिलता है। एडिट लेआउट पे ऑटो नंबर डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन अगर आप डिटेल लेआउट पर, हियर लेट मी सी, अभी कितनी फील्ड्स हैं यहाँ पे, नेम, नंबर, HRID है ना, दीज आर द फील्ड क्रिएटेड बाय ओनर, लास्ट मॉडिफाइड बाय। लेट मी रिफ्रेश दिस, सी वी हैव एडेड वन मोर, HRID ऐड हो गया और कशिश का नंबर क्या है, HM हायरिंग मैनेजर डैश 001। ये होता है। तो डिटेल लेआउट पर आपको ऑटो नंबर्स नजर आते हैं, डिटेल लेआउट्स में, ठीक है। चलो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं आता, अगर यहाँ लाना है तो कैसे लाना है वो मैं पेज लेआउट कस्टमाइजेशन पे सिखाऊंगा। तो वी हैव क्रिएटेड वन मोर फील्ड, एक फील्ड और बन गई है, एक और फील्ड बनानी है लोकेशन नाम की, तो क्लिक द न्यू बटन। तो ऑटो नंबर HRID बन गया है। द नेक्स्ट फील्ड इज लोकेशन, लोकेशन का टाइप क्या है, पिक लिस्ट, लोकेशन का टाइप क्या है, पिक लिस्ट। So let me select pick list from here, pick list, and then click the next button. Field name is location. Name is location. अब ये पूछना है आपकी कि क्या ग्लोबल पिक लिस्ट यूज करना है कुछ ऐसा कुछ, या हम अपने से वैल्यूज एंटर करना है। तो वी वांटेड टू एंटर द वैल्यूज बाय आवर ओन। तो ना ईच वैल्यू शुड बी सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो पिक लिस्ट में यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, दीज आर द वैल्यूज। लेट मी जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर, हैदराबाद, बैंगलोर, है ना, दीज ऑल आर द वैल्यूज। सो these all are the values, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, है ना, ये सारी वैल्यूज। अब मैंने पहले से डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है वैसा। तो मैं तो आफ्टर एंटरिंग हैदराबाद आपको एंटर प्रेस करना है और नई लाइन पे बैंगलोर, तो उसके न्यू लाइन पे चेन्नई, इस तरह से एंटर करना है, ठीक है। डू यू वांटेड दिस टू डिस्प्ले अल्फाबेटिकली, इसको आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, यस कर देते हैं। डू यू वांटेड द डिस्प्ले द फर्स्ट वैल्यू एज अ डिफॉल्ट, ये नहीं करते, तो ये कहीं और करेंगे। तो पहले ये हैदराबाद हमेशा दिखना चाहिए क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो हम पहले नन दिखना चाहिए, उसके बाद में लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। यानी डू यू वांट टू मेक इट रिक्वायर्ड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आइडेंटिफाई करने बोल रहा हूँ आप सभी को यहाँ पर। व्हाट वी आर क्रिएटिंग, पिक लिस्ट, व्हाट वी आर क्रिएटिंग, पिक लिस्ट, फिर से व्हाट वी आर क्रिएटिंग, पिक लिस्ट। पिक लिस्ट डेटा टाइप पर पिक लिस्ट को रिक्वायर्ड करने का ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। डेटा टाइप इज पिक लिस्ट एंड यू हैव एन ऑप्शन टू मेक इट रिक्वायर्ड। अच्छा अलग बात है कि पिक लिस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ना, वो अलग चीज है। But when we create this field from the standard navigation पे पिक लिस्ट को रिक्वायर्ड करने का ऑप्शन है। अभी क्या है, इसके बाद में आपको फील्ड क्रिएशन बताऊंगा मैं विद स्कीमा बिल्डर, स्कीमा बिल्डर से बताऊंगा। स्कीमा बिल्डर से अगर आप पिक लिस्ट बनाते हो तो उसको रिक्वायर्ड करने का ऑप्शन नहीं रहता, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको ऑब्जर्व करके अपने दिमाग में रख लो।
ठीक है, कि whenever we create a pick list using the standard navigation, we have an option to make it required. और ये ऑप्शन आपको स्कीमा बिल्डर पे नहीं दिखने वाला है, ठीक है। चलो, तो लेट मी, अभी तो रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं क्लिक भी नहीं करता, ऑफ कोर्स। लेट मी जस्ट क्लिक द नेक्स्ट बटन, make it visible for every profile user, click the next button and then save it. These are the 4 different steps, 4 to 5 steps, which is required to create the fields inside the object. So we have created one more field, location field. अब मैं यहाँ जाता हूँ, if I refresh this, यहाँ पर देखो एक नया पिक लिस्ट तैयार हो चुका है लोकेशन नाम से, and these are the values, और ये सॉर्ट आउटेड है, B C D E F H G H like this. Okay, so these are this is the way, this is the way to create the fields inside the object. तो आज हमने ये fields बनाया, and we have done this with the standard navigation. स्टैंडर्ड नेविगेशन से हमने ये बनाया। कल हम इसके बाद वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, और कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में फिलहाल एक ही फील्ड है। बाय टुमारो वी आर गोइंग टू क्रिएट दीज मेनी फील्ड्स, एंड दीज मेनी फील्ड्स वी आर गोइंग टू क्रिएट इनसाइड द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट सीटीसी, एक्सपेक्टेड ईमेल, लोकेशन, नोटिस पीरियड, पैन नंबर, व्हाटएवर। बाय टुमारो वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस ऑल। इसमें कल काम करने वाले हैं हम लोग, और इसको भी मैं स्टैंडर्ड नेविगेशन से ही बना के देता हूँ। उसके बाद मैं लेके जाऊंगा आपको पोजीशन ऑब्जेक्ट पे, जहां ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करूंगा स्कीमा से, स्कीमा बिल्डर से, और ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स भी क्रिएट करूंगा स्कीमा बिल्डर से। और कल आपको आइडेंटिफाई करने लगवाऊंगा कि आपने देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टैंडर्ड नेविगेशन से, मैंने फील्ड्स क्रिएट किया स्टैंडर्ड नेविगेशन से, उसके बाद पोजीशन पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कीमा बिल्डर से, और मैंने फील्ड क्रिएट किया स्कीमा बिल्डर से। तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व, कल हम इस पे बात करने, ठीक है। चलो, बाय टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर। अगर आप चाहें, ये मैं डॉक्यूमेंट आईडीडी आज शेयर कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर दिस बाय टुडे इन द ड्राइव, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसको, एंड एटलीस्ट क्रिएट द फील्ड्स इनसाइड द हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी फील्ड्स क्रिएट करके रख लो आज के आज। कल हम इसके आगे देखते हैं।